हम आपको जूम करके जो है इस पक्षियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बोले, विदेश से भी आता है यहाँ पर? भी आता है, यहाँ चिड़िया को छीन लेता है। अच्छा। और जाता है। कांवर लेक के जो भूमि का एरिया है उस पर एक टावर बना हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दराज तक जो है पूरा लेक ही लेक नज़र आ रहा है। बीच बीच में जो है यहाँ पर आप ये जंगल का दृश्य देख सकते हैं। जंगल एरिया है ना पूरा? हाँ। अच्छा, तो इस जंगल में घर सब है कि नहीं है? नहीं, घर नहीं है, पूरा जंगल ही है? जंगल है, जंगल। घर में गेट है। हाँ। इधर से जाएगा, उधर से नहीं आएगा। अच्छा, इधर से ये उड़ गया है यहाँ से। ये पक्षी का जो झुंड है ये इस लेक के ऊपर किस प्रकार से जो है मंडरा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा पक्षी जो है यहाँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नीरज राय, आप देख रहे हैं नीरज राय ब्लॉग। और आज हम लोग हैं बिहार के बेगूसराय ज़िले में और हम लोग देखने आए हैं यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा झील कांवर झील, इसको कांवर लेक भी कहा जाता है। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कांवर झील का जो दृश्य है और उसमें लगे हुए इस नाव को देख सकते हैं। यहाँ पे नौका विहार का जो है आनंद आप आकर के ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको इस लेक का दृश्य दिखाते हैं और नौका विहार भी हम लोग करेंगे, उसका भी दृश्य दिखाते हैं। तो ये यहाँ का जो कांवर झील का नौका विहार का दृश्य है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाव जो है यहाँ पर इस किनारे में खड़े रहते हैं और यहाँ पर आने वाले सैलानियों के लिए जो है यह उपलब्ध रहता है। आप इसमें बैठ कर के इस लेक का जो है आनंद ले सकते हैं इस नौके पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है फाइनली इस नाव वाले से जो है ये फाइनल कर चुके हैं। यहाँ का जो रेट है, यहाँ का जो चार्ज लगता है इस नौका विहार का, तो हम लोग अब चलते हैं और इस नाव में जो है तो बताइए कि कहाँ
है और यहाँ पर जो ये नौका विहार का आनंद आप ले सकते हैं। ये तो सच में एक बहुत ही जो है मनमोहक जो है दृश्य यहाँ पर पेश करता है। यहाँ के पक्षी विहार का जो है आनंद है, काफ़ी सुंदर है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।